Hmm. Hello and good evening once again, everybody. And I hope you all are watching many television shows as of now. But I thought let me just connect once again with all of you about one of the things which is going on. Let's see, let me see if more people are coming in and they would like to know more about Bollywood, Akshay Kumar, and on the top of it, there is Ali Fazal. Because of him, I'm here today, and I want to talk about what's the entire matter, where are we really heading as far as this entire Bollywood, the web series content is concerned. Then we talk about the recent development, the recent tweet by Ali Fazal. So I'm waiting for more of you to give me a thumbs up that you are there so that I can talk about it and we can all discuss more about Ali Fazal and talks regarding to Akshay Kumar, whose movie is going to come soon on 7th of November. It's releasing. आपने सबने बहुत क्लोजली ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा. See, I also used to admire and always used to think that he is like, when we talk about Akshay Kumar, he has always been one of the top list Bollywood actors so far. But since the time जब से SSR का ये जो केस हुआ है, उसके बाद में बॉलीवुड का ये जो पूरा स्वरूप सबके सामने निकल करके आया है, ये आपने भी देखा, हमने सब ने बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर किया है. वी हैव ऑल सीन इट एंड वी हैव रियलाइज दिस फैक्ट दैट दिस इज़ समथिंग विच वी ऑल कैन नॉट बी जस्ट take it just like that, every time they give us something and we take it. We all admire, we all admire all the actors, all the these people who have been there in the industry जो इतने सालों से चल रही है, which is so old, and it's the people who have made them. But now this is the time we should always try and talk about them very openly. So that's the thing, that's the reason I was here. So when he said his recent वेब सीरीज़ जिसको कि ट्विटर के ऊपर बहुत एक्सट्रीमली बॉयकॉट किया जा रहा है और एक ट्रेंड चला दिया गया है, बायकॉट मिर्ज़ापुर 2. So this is something which came to my mind that I should share with all of you over here, that's a second part of Mirzapur series. Though Mirzapur and all other web series which have been coming in on all these OTT platforms are supposedly not that all kinds of, there are no censorships which have been there. आपने खुद देखा हुआ है, बड़ा ऑब्जर्व किया है मिर्ज़ापुर 1, नाउ मिर्ज़ापुर 2. अब अली फजल का जहाँ तक सवाल उठता है, वो कह रहे हैं, आज अभी का उनका थोड़े टाइम पहले का एक ट्वीट है, जो बायकॉट मिर्ज़ापुर ट्रेंड चला है, ही सेइंग आर वी एट द मर्सी ऑफ अ ट्रेंड. सो ये ध्यान देने वाली बात है जो कि आप और हम सब समझ लें दैट he is so clear about his things, we are just analyzing his tweet, what he has tweeted recently, that are we at the mercy of a trend. That's what he's saying, that are we at the mercy of a trend. So this gives us an alarming situation for all the people who are watching it, or people who have been appreciating it, not only because of Ali Fazal but because of a lot of other actors who are part of it. But at the same time, अगर ये इस तरह से बोल रहे हैं that are we at the mercy of a trend, and people when they are boycotting it, there is a reason behind it. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि उनकी दूसरी चीज़ों को लेकर के है, जो कि आपने खुद ने देखा होगा 2019 तक अगर आप जाएं, then you will be able to see through that thing, that how
ही हैज़ ट्वीटेड इट, उन्होंने ट्वीट किया था एक 2019 में। उनकी कुछ इसी टाइम पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप जेएनयू की बात करें, जहाँ पर हम सीएए और एनआरसी का विरोध करते हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। उस दौरान जब ये प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट के बाद में अली फजल ने ये ट्वीट किया था, आप जा कर के देख सकते हैं, 2019 का उनका ये ट्वीट है। उस ट्वीट में वो क्लियरली ये बोल रहे हैं दैट मज़ा तो अब आएगा। अभी तक तो सिर्फ एक छोटी सी बात ही, ऐसा कुछ ट्वीट है उनका, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मज़ा तो अब आएगा। So you can imagine the kind of I don't know why, and that's the reason that people have started with this trend of boycott Mirzapur too. But at the same time, we should also understand that his things are very, very clear. He is very clear about what he aims to do. He is very clear about his ideologies. He is very clear about what he is writing. He doesn't even, he has said this very clearly that he doesn't care. And एक किसी particular trend को लेकर के, ट्रेंड मतलब जो आप ट्विटर पे चलाते हैं, कौन चलाता है ट्विटर पर? लोग चलाते हैं, जनता चला रही है, या कुछ पेड पीआर मशीनरीज हैं, वो भी उन चीज़ों को चलाती हैं। जहाँ तक होता है, दीज पीपल डू इट। सो उस सब के बावजूद ही सेइंग दैट I am not at the mercy of any kind of, Mirza Puttu is not at the mercy, and he himself. So that's something which is alarming, that we should understand that these people at the end don't care much about the viewers who have been watching them, who have been admiring their work. And you people have also seen how they always react to certain things. So please understand these things. And also I would like to talk about two of the more things which are there on and from Bollywood. That is about Akshay Kumar, and I started with that also, that we used to respect him, and there is so much so going on about his movie which is coming, and Lakshmi Bomb, that's the movie, that's the name in itself is something which I just do not admire, the way he is putting it across. और जिस तरह से सड़क 2 के ट्रेलर को बहुत ही बुरी तरीके से आपने देखा कि कैसे उसको पूरा डिसलाइक किया गया था, आपने खुद बहुत ऑब्ज़र्व किया, आप सब ने उस चीज़ को कितना डाउन किया। अब इन्होंने ये एक नया रुख अख्तियार किया है, अगर मैं बोलूँ तो, दैट ये लोग ने लाइक और डिसलाइक इस पूरी चीज़ को, ऑप्शन को पूरा ही ख़त्म कर दिया है अपने ट्रेलर में से, या फिर आप बोलें कि अपनी जहाँ भी ये लोग ट्रेलर चला रहे हैं, जहाँ उसको प्रमोट करें, सो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग दैट थिंग, बिकॉज दे डोंट वांट दैट पीपल स्टार्ट पुटिंग ऑन दैट डिसलाइक बटन ऑन. सो that's one of the things which everybody is talking about. So समझने वाली बात ये है कि ये whatever they want they change, and they try to manipulate, they try to change, and everybody is they are trying to put on things on everybody's mind, and then putting it in other ways. So I think we are the ones who should be thinking about it, taking it really seriously, that yes, this is high time that we start raising our voices, start understanding how things are going on in Bollywood. अभी अभी एक और खबर थी थोड़ी देर पहले, एक और जगह पर ये बात आई थी, दैट कोविड-19 का जो सारा कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू एक चलता है, लाइक यू कॉल इट, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो एक लेडी का वॉइस आता है उसमें, और उस वॉइस को जो बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं, लेजेंडरी श्री अमिताभ बच्चन जी जिनको कि बोला जाता है, उनकी वॉइस से रिप्लेस कर दिया गया है। अभी ये भी एक अपने आप में बहुत सोचने और समझने वाली बात हम सब के लिए है कि how this is happening, why this is happening, that we the people who have been watching them, he and his family, they all kept quiet for so long. They didn't say anything. When they spoke up, and especially
उनकी वाइफ ने बहुत अजीब तरीके से जो पार्लियामेंट में बोला था, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज not taken very positively by anybody. So after that his voice is coming in for COVID-19. That is also something which we believe that should not have been done, but yes, because I don't know about the marketing things which how they are shaping up in the Bollywood and also amongst all the A-listers, what is happening. So that's these are few things which I thought that let me talk about them, and this Ali Fazal and Akshay Kumar, and also about this recent update. So I thought to keep you all posted about it. So I came here, and thank you so much for watching, and thank you so much for all your support. And I'll be here tomorrow again, and we will talk more about such things, and we'll also talk about SSR, and we'll talk about other aspects which are related to socio-political issues, as I told in the last video of mine. If you have any questions, do connect with me. I'm here for next 5 more minutes so that we can chat and we can discuss about Bollywood. We can talk about what you think are the points which are there. Thank you, Dinkit. And we have started hating Bollywood very bad extent. Yes, I know that sentiment is there, Amanji, and I believe that that is something that they have created. People are not responsible for it. They themselves have created this kind of environment because they have chosen, they have created a lobby of their own. They have created a silent lobby, rather, I would say that this lobby is going to speak for Sushant. There were very few जिनको आप आराम से उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो लोग कुछ थे जिन्होंने बोला, बहुत ही चंद लोग वो थे जिन्होंने बोला, जो स्पीक अप किए. उसके बाद में एक लॉबी खड़ी हुई, जो भी हमने वो भी देखा हमने, और किस तरीके से इन्होंने डिवाइडेड रूप में सारा कुछ किया. उसके बाद में फाइनली जब अक्षय कुमार या किसी की भी मूवी आने लगती है तो दे ट्राई टू कनेक्ट विद ऑडियंसेस बिकॉज दे नो सड़क 2 के साथ में क्या हुआ था, ये उन्होंने बहुत क्लोजली देख लिया है. एंड दे आर टू मच एक्टिव. यू आर राइट रितु, वेरी करेक्ट. And it is too much active, and they are trying to play around, they are trying to use all kinds of tactics to manipulate minds of people. So these are certain things which we should really understand as uh, intelligent people, that this is not to be done. It is an issue which needs a serious introspection. Yes, he pretends to be naive and two-faced person. Yes, he is. I mean, I am not somebody who I used to be an admirer of Akshay Kumar, looking at his lot of fitness regime. He used to talk about health, fitness, lot of things. But then when he kept quiet, I was also I am also still apprehensive about it. So correct. We must. I lost that communication. If you can just again write it. Akshay Kumar is fake. I don't know if he's fake or not, but what I can see is like everybody is trying to play smart. Everyone is trying to see. They all need, once they create a movie, they invest time, they invest money, they invest a lot of things. So I don't know. I mean, they should also understand certain responsibility. That is my point over here. Whether it is Ali Fazal, whether it is Akshay Kumar, this is not about caste. This is more about they should feel responsible what is happening in their own industry. And that is what, when Jaya Bachchan ji also said the same thing in parliament, was she not aware about what has been going on? Don't you people think that she knew about what's been going on for the last so many years in Bollywood? She knew it, and then she kept quiet, keeping like somebody who is like doesn't know anything, and then suddenly coming up. Either she should have opted to keep quiet for even for next few more months, rather than spoiling the entire image or saying something which has no sense. It was so nonsensical statement which was given. So everybody says that, and there are more questions which are there.
Ma'am, they fear to get fired from the industry. All are just selfish and money minded. Emotions have got no values in their eyes. Yes, of course, true. But yes, at the same time, when we, appreciate Bollywood, when we go mad about Bollywood, I'm not here to, blame any one person. I'm here to blame about the entire, fraternity. When they talk about it, why didn't they speak up any single thing? It was like people were saying ki why this person is keeping quiet, why that person is keeping quiet, why he is not saying anything. अरे आपकी इंडस्ट्री का टैलेंटेड लड़का, ही डाइड एट द एज विच वॉज सो यंग एंड यू पीपल डोंट इवन केयर. और आपने ये ट्वीट नहीं किया या आपने ये कब ट्वीट किया, इसकी केयर लोग करेंगे या आप और हम करेंगे कि इन्होंने ट्वीट नहीं किया. दे आर नॉट गॉड्स. वी शुड स्टॉप ट्रीटिंग देम लाइक गॉड्स. दैट इज़ समथिंग विच रियली हर्ट्स मी अलॉट. बिकॉज सी, कहीं किसी की मौत होती है, आपके हमारे घर की हम बात करें, हमारे सगे संबंधी साथ के कितने लोग होते हैं, आपके जॉब प्लेसेस पे कितने लोग होते हैं, सांत्वनाओं की पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग ट्वीट करते हैं. ना कि इस तरीके से होता है जो कि इन लोगों ने ट्रीट किया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में. दिस रियली गिव्स मी लॉट ऑफ एंगर. एंड ऑल्सो दे केप्ट फॉर क्वाइट फॉर सो लॉन्ग. इट टुक देम सो लॉन्ग. और उसमें भी आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो भी major chunk of Bollywood actor and actresses, even we approach them. I am being very frank with you. We approach them. Would you like to say something? Would you like to speak up? They are very good friends of mine, some of them. I would not say that because we run a magazine also, which is Aspiring She magazine. I have covered them also on my magazine. We interviewed them. We have written about them. It is something, कि आपको जब बोलने का कहा जा रहा है, you are choosing to keep quiet. यू आर नॉट रेडी बिकॉज आपको ये है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए मुझसे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो कहीं कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को फिर मुझे काम न मिले. अब कुछ लोगों ने अपनी वॉइस को इसलिए डाउन कर लिया. दे डिडंट से एनीथिंग. दे इवन टोल्ड मी नमस्ते, अभी हमें कुछ नहीं बोलना है. आई विल नॉट नेम दोज पीपल बट दे सेड दैट नो कॉमेंट्स प्लीज़. So this is something which gives that kind of a feeling. There are so much more to it because we have worked very closely with all of them, whether it's TV or it's Bollywood. We have worked with them. We have interacted with them, so we actually know how these things really work in the real world, not the real world but in the real world for them also. सो दिस इज़ समथिंग बट एक अंतरात्मा होती है, उस अंतरात्मा की कुछ आवाज़ होती है. उस आवाज़ को ये लोगों ने दबा दबा कर बहुत टाइम तक रखा, 14 जून से लगा करके कई समय तक. और उस वजह से ये जो एंगर है लोगों के मन में, इसको ये मिटा नहीं सकते इतनी आसानी से. और आप बस इतना कर दो कि आप डिसलाइक और लाइक का बटन जो है उसको आप ऑफ़ करवा दीजिए. उससे आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू सर्व दी पर्पस. ये नहीं तो एक कोई तरीका है कि आप ये कीजिए. आपको अगर कुछ करना है, आपने एक वीडियो भी बनाया था, अक्षय कुमार जी ने एक वीडियो भी बनाया था जो कि बहुत जगहों पर वो चला, हमारे इस पर भी है. और उन चीज़ों को लेकर के भी ये लाइक दे आर सेइंग कि हमने ऑडियंसेस से माफ़ी मांग रहे हैं, ये करें वो करें. अरे आप अब माफ़ी मांग रहे हो, अब आप माफ़ी मांग रहे हो. कब माफ़ी मांग रहे हैं? जब आपका 7 नवंबर को मूवी आ रहा है, तब आप लोगों को इस तरीके से वेयर वर यू लाइक ऑल दोज 2-3 months before. After Sushant's death, where were you? You are clicking a picture also. It's like a funny thing which somebody will do. I mean, आप क्या साबित करना चाह रहे हो? मतलब मुझे तो ये चिल्लाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, बट मुझे लग रहा है कि किसके ऊपर अपना बीपी मुझे हाई करना है. बट एक अंदर से एक आक्रोश है जो बहुत, मतलब पब्लिक ने इनको बनाया, देखिए. और जब पब्लिक किसी एक एक्टर को लेकर के, जिसका कि सडनली जिसके साथ में कुछ अनहोनी होती हैं, अभी मर्डर है, सुसाइड है, हम कुछ नहीं बोले, पर आप कहीं कुछ उस चीज़ के प्रति कुछ तो बोलिए. नहीं,
They didn't say anything. So that silence is the killer. मेरे ख्याल से that is what I feel, that that's the killer. Even for them, that's the killer. Why did they do that? Why did they keep quiet? And that is why public is also now taking, and they should be, taking revenge over all these things. And this is something which should have been taken very seriously earlier also. But ठीक है, हम लोगों ने श्रीदेवी के टाइम पर कुछ नहीं, किसी ने इस तरह की बहुत ऊंची आवाज़ उठाई. दिव्या भारती के टाइम पर इतना ज़्यादा कोई मीडिया और डिजिटल वो नहीं था. अब उन लोगों को अगर आप रीओपन करेंगे, देन थिंग्स विल ओपन अप. आई डोंट नो अबाउट द प्रूफ्स एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम दिशा सल्यान को आप देख लीजिए. शी वॉज नॉट एन एक्ट्रेस, बट शी ऑल्सो नीड्स जस्टिस. Her mother, her father, they also made to keep quiet, and they also shunned media when they were asked about certain things. So yes, of course, I mean, this is something, ये सारा कुछ जो गेम प्ले कर रहे हैं, they are thinking they are above public. So of course, please forgive us. You people are not above public. कहीं से नहीं है आप. जिया खान बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ. सब लोग चुप रहे. सब ने, एक परवीन बाबी फॉर डैट मैटर, सब लोगों ने यही मान लिया कि हाँ ठीक है यार, कुछ हुआ होगा, शायद हो सकता है कहीं ज़्यादा कुछ, शी वॉज लोनली, शी वॉज दिस, शी वॉज दैट. आई ऑल्सो डोंट हैव एनी प्रूफ्स, बट जो सारे कुछ मैटर को आप एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन डिटेल. You will get to know about it, and there are people who are talking about it, on some lawyers and some legal prospects also, that how things are happening. जुडिशरी सिस्टम नीड्स मॉडिफिकेशन. डिले ही होते आया है जब से. या वेरी ट्रू जी, आप सही बोल रहे हैं. और डिले ही होता आया है, डिले ही होता रहता है. और ये जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके लिए भी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. निर्भया के केस को कितना टाइम लग गया. अभी ये हाथरस का आप देखिए क्या हाल होता है. हालांकि योगी आदित्यनाथ जी हैं. We all are hoping that he will do that. The actors today have to be held responsible promoting crime and drugs. Yes, they should be. See, they have been promoting crime, they have been promoting drugs. Not that promoting, they are hiding it. Firstly, हाइड करा आपने, एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि आप सारी आम जनता के सामने एक झूठा स्वांग रच रहे हो. आप स्वांग रचते हो, आप ऐसे ऐसे स्वांग रचते हो, और आप समझ रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं, आपके थिएटर्स में मूवी आएंगी, अगेन लोग भूल जाएंगे. क्योंकि इंडिया के लोगों की जो मेमोरीज़ होती हैं, बहुत शॉर्ट मेमोरीज़ हैं हमारी, और वो समझते हैं कि लाइक थिंग्स आर गोना गो सो स्मूथ. So that's how it is. But I thought, let me bring this up because I saw that tweet and it really, I did not like that. So I thought I should speak up on that thing, that Bollywood and how things are going on there. Drugs are the energy boosters for them, and they do so addicted, they cannot get rid of it. See, these addictions and all, they know themselves very and pretty well how to manage those things. They are fitness freaks themselves, as they call it. एंड एज द अदर सेक्शन ऑफ द पीपल, जो मैंने इंटरव्यूज़ बहुत लोगों के देखती रहती हूँ, आई हैव सीन इट ऑल्सो एंड आई हैव ऑब्जर्व इट दैट दे आर कॉलिंग इट दैट हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आज के एक्टर्स हैं, जो हमारे आज के बॉलीवुड के सारे कलाकार हैं, आप उनको देखिए वो कितने फिटनेस फ्रीक हैं. वो जो हैं, क्या वो इस तरह का ड्रग्स कुछ ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके फेस से आपको क्या लगता है? जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके तो फेस बहुत अलग होते हैं. सो इस तरह की जो कुछ जगहों से कई जो सीनियर, आई वुड नॉट नेम देम अगेन, बट इस तरह के इंटरव्यूज़ हैं जो देखने में आते हैं व्हेन यू आर एनालाइजिंग थिंग्स. सो that's ridiculous that fitness is something which is there. Sushant was also a fitness freak, so they have bas wahi hai. I could not read that. If you would like to send it again, please. So see, देखिए, नथिंग लाइक कि हमें किसी पर्सनली किसी के साथ, आई वॉन्ट टू से दैट, बट आई डिड नॉट लाइक अली फजल्स ट्वीट, स्पेशली व्हेन इट वाज मेंट. देखिए, जो गुजरात में हुआ था 2019 में, जो सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस के ऊपर जो इन्होंने स्टोन पेल्टिंग की थी और बहुत कुछ इन लोगों ने किया था, उसके बाद में उसके अगले दिन जब फिर ये अली फजल ने इस तरह का ट्वीट किया, दैट आई रियली डो नॉट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल व्हाट ही हैज़ रिटन. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. आई रेड इट आउट अर्लियर ऑल्सो. मैंने
पढ़ के बताया था आपको कि अब मज़ा आ रहा है, मतलब एक दिन बाद में वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि अभी थोड़ा तो पहले तो धीरे चल रहा था जो भी चल रहा था, लाइक जो दिल्ली में है, यहाँ वहाँ जो छोटा मोटा कुछ हुआ, बट जब गुजरात में हुआ उसके अगले दिन इन्होंने ऐसा लिखा और आज फिर से ये अपनी चीज़ों को ये रख रहे हैं कि मुझे किसी के ट्विटर के ट्रेंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डू नॉट केयर, आई एम नॉट एट मर्सी ऑफ एनी ट्विटर ट्रेंड. So please guys, you know it well, you know where to draw the line, you know where whom to choose, whom not to choose. I am leaving it up to you to decide, and you know it better than anyone else because you have done it for Sadak 2 also. SSR, a beautiful soul, जो मरने के बाद भी बॉलीवुड के yes, yes, our feelings, our sentiments are with him and with his family. So, to all regards to SSR and to his family, we all understand that what has happened should not have happened with him. But as we sitting here could not have helped at that point of time, now we can only ask for justice, though these things could not get him back. But yes, why Big B is not coming in support of the justice, it's very shocking. Yes, Amanji, this is shocking, but see, he has his own plans. That's what we have all analyzed. That he being very, very, old in the industry, he has been there for about many good years now. So he would like to maintain that so-called decorum. So he will follow the guidelines which have been given to him by his PR, which has been given to him by certain, I don't know, officials also for that matter, that you have to keep quiet. So probably he's maintaining that, and he's keeping quiet, he's keeping mum, he's just watching around what's happening. But yes, at the same time, that would have been, appreciated by one and all his fans, that yes, we also feel that that's a kind of a betrayal, that he should have said at least something rather than just posting a pic or some, other kind of things. But yes, ठीक है, as a senior person, उनको अगर आप side भी कर दें, I would say that because he has served in the industry for many good years. अब उनकी वाइफ ने क्या बोला देखिए, अब अमिताभ बच्चन जी खुद हैं, वो ठीक है, he believes in lot of PR, he is good at that, and we all respect him, that is something जो था. But देखिए, ह्यूज लेट डाउन है AB एंड JB, मैं समझ सकती हूँ आपके सेंटिमेंट्स जो कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप उनकी जगह रह के भी तो सोचिए कि अब उनकी वाइफ ने कुछ बोला, उनके आपसी जो भी चीज़ें होंगी, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये मुझे जा कर के और वक्तव्य देना है, कंगना रनावत ने बोला है, और उसके अगेंस्ट में शी वर टू से समथिंग, एंड देन द ड्रग एंगल केम इन बिटवीन. So she said what she wanted to say. Then Amitabh Bachchan can't go against his wife, definitely. So that's something he has to back up first because that's about family. So we can't get into personal things. But I believe that yes, he should have stood up earlier times when he said that he had suffered from corona और जो भी नानावटी हॉस्पिटल और उनका जो भी रहा, मतलब 10 दिन तक. So he was away. But we wish him health, and but we would have all appreciated that he could have come out. और हालांकि उन्होंने सुन रहे हैं कि वो शायद करोड़पति और जो भी उनका चल रहा है, आई एम नॉट फॉलोइंग इट अप मच, बट येस, it's up to you the people who can decide about him as well. But he being a very senior person from the industry, I would not like to say anything like because उन्होंने काफ़ी टाइम तक लोगों को एंटरटेन किया है, और उनकी वाइफ ने जो कहा है वो उनका शायद पर्सनल मैटर भी हो सकता है, बिकॉज वो एक राजनीति से जुड़ी हुई हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और उनको पूरा हक था अपनी बात रखने का, तो उन्होंने रखी. जो उनकी सोच समझ है, विचार हैं, उसके अनुसार उन्होंने देखिए अपनी सोच रखी. अब उस समय कंगना रनावत ने जो बोला था वो उससे कनेक्ट हुआ, इस वजह से उनको आक्रोश आया और उन्होंने बोला. आप उनकी जगह रह के देख के भी थोड़ा सोचिएगा कि जिस व्यक्ति ने, जो सदी के महानायक कहे जा रहे हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, इतनी सारी मूवीज़ उनके नाम पर हैं और हॉलीवुड तक उनकी पहचान है, लाइक ही इज़ द स्टार ऑफ द मिलेनियम, और बहुत कुछ बोला जाता है अमिताभ जी को. बट फिर उसके बाद उन्हें भी ये चीज़ थोड़ी लगी होगी. बट
शायद उनके वक्तव्य में, उनके वाक्यों में, उनके शब्दों में कुछ न कुछ थोड़ा उन्हें तरीके से ये बात रखनी चाहिए थी, रादर देन सेइंग दैट थाली में, जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। ये थोड़ा लोगों को आपत्तिजनक लगा और ये नहीं बोलना था उन्हें, जो रवि किशन ने भी उसका फिर रिवर्ट किया था। जी हाँ, और ठीक है, वी हैव एज, देखिए हम लोग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। हम लोग मानते हैं कि अमिताभ जी ने बहुत कुछ इंडस्ट्री को दिया, लोगों को दिया, उनकी एक बहुत अलग पहचान थी। पर हाँ, वो अगर एसएसआर के लिए इस रूप में आते जैसा कि वो कोविड-19 के लिए आए हैं, तो शायद अभी तक उस चीज़ का भी उपचार हो गया होता और वो एक वॉइस और बड़ी हुई होती। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। AB remaining silent on this issue is like PM remaining silent. Everyone should know that we the people are keen on it. Yes, 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 correct, Dinkesh. If this is right, and he should have spoken. See, we can always talk about it, and we hope that our voices are reaching him. He also knows it, that since the time जया बच्चन जी ने बोला था, उसके बाद से उनका खुद के ट्विटर के हैंडल पर जिस तरह से ट्रोलिंग हुआ है, ही ऑल्सो नोज़ इट, ही हैज़ बीन फॉलोइंग इट, ही नोज़ इट कि कितना नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है उनकी बातों को और उनकी चीज़ों को। तो दिस इज़ हाई टाइम he should come out in public and talk about it. That's the best way of going about it. Like Akshay Kumar did it, but he failed. To certain extent, he failed. But with him, probably because of his, contribution to the industry, people will turn out to be positive about him. That's what I feel about, particularly for Amitabh Bachchan. Though he is also kind of somebody who people claim to be an opportunist, but I personally still feel that there is something which he can turn into positivity. I have that feel, so you people can decide about that part. And Dishes Salia to ऐसे ही secretary थी. Even Ash has not sent a condolence message. How bad? Yeah, that's true. That's the entire family decision. See, आप ये समझ रही कि they are all part of one family. So if one person is not saying something, so they all will decide unanimously that हमें नहीं बोलना है। आप समझिए ये बात को। हमारे भी घर में कुछ होता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं बोलना है इस मैटर पे, चुप ही रहिए अभी। सो एक आप उस तरीके से चीज़ों को समझिए। आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ SRK, इवन SSR वॉज हिज फैन टू, बट SRK ऑल्सो बिट्रेड। या ट्रू, वेरी ट्रू, दैट ही तो डिडंट से एनीथिंग। उनके घर के तो सामने बैनर लगा है, उनके घर के मन्नत के सामने भी बैनर लगा है, जस्टिस फॉर SSR और सब कुछ, डिलीट जस्टिस, और बट ही इज़ नॉट स्पीकिंग अप। यू कैंट हेल्प इट बिकॉज इन लोगों को सारा कुछ जो इनका PR है वही उनको बताता है आपको कब, क्या, कहाँ, कैसे बोलना है। सारे वाक्य भी इनके स्क्रिप्टेड होते हैं। ये हमारी और आपकी तरह नहीं है जो स्पॉन्टेनियस आके बोल जाएं, क्योंकि हम लोग ट्रूथफुल हैं। हमारे यहाँ कुछ छुपा इस तरह से नहीं है कि अंदर इधर है बाहर है, ऐसा कुछ नहीं। वी आर स्पॉन्टेनियस पीपल, वी कैन कम एनी टाइम, वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स, वी कैन डिस्कस थिंग्स इन डिटेल, एंड वी आर वेरी जेन्युइन पीपल एंड वेरी स्पॉन्टेनियस। बट जहाँ PRs काम कर रहे हैं, उनके एक एक वाक्य को, उनकी एक एक बात को बहुत तरीके से सोच समझ के बुलवाया जाता है। सो लेट्स कीप दैट थिंग इन माइंड, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी नेगेटिव थॉट्स टू एनी वन बिफोर वी go off to sleep, but I just thought let me raise this up. And once again, thank you so much, and keep following us, keep appreciating what you people are doing and each other. That's something which matters, and we should all stay united, stay safe, and stay positive about everything what's been going on, and stay alert also. That's very important, that what's going on around you, that's very, very important. Thank you so much, Amanji. Good night, and good night to everybody who have watched this, and keep have a great Sunday tomorrow. Thank you.